Viewers, tragedy struck Kalyan in Maharashtra after 6 were killed, including a 2-year-old child, after a slab collapsed in a building, and 4 others have suffered injuries. And this after a slab of a dilapidated structure of this particular building that you see on your screens collapsed. And right now, the rescue and relief operations are currently underway for survivors. But what we know so far is that 6 people have succumbed to injuries, whereas 4 others have been left with critical wounds following the incident. There you can see the rescue teams are currently at the building collapse site, scampering and looking for survivors under the rubble. In fact, what we understand is that the portion of the building where the tragedy was witnessed was a dilapidated structure. No measures were taken to make the necessary repairs, which has resulted in this particular tragedy, which has claimed the lives of 6 individuals residing in that particular building. And what's even more unfortunate is that a 2-year-old child was also one of the deceased members. In the aftermath, the rescue and relief operations are currently underway. The local MLA has also visited the site and he has taken stock of the situation. The residents have been assured of assistance from the state government as well. But the real reason, the cause behind this particular tragedy is yet to be ascertained. But what we know is that this particular structure was dilapidated, and this resulted in the collapse of a huge slab in this particular building, which has killed at least 6 people. And what we understand is that the Kalyan police have now registered a case against the building owner. Wheels of justice have started to turn, with the FIR now being registered against the building owner. The flat owner has been booked by Kalyan police after the incident claimed the lives of 6 individuals living in that particular building. And we'll get our reporters live in just a few moments, but let me summarize what has happened yesterday. A portion of the building, a major slab, collapsed in this particular residential structure located in Kalyan of Maharashtra, resulting in the deaths of 6 individuals, which also included a 2-year-old child. And in the aftermath, the rescue teams have claimed that over 4 people have suffered injuries, and the hunt for survivors is currently underway. Rescue and relief operations are currently happening on a war footing. And in the latest, the flat owner, the building owner, has been booked by Kalyan police. Sandeep is joining us live from the site where the tragedy was witnessed. Sandeep, tell us what's happening on ground zero. Are rescue and relief operations currently underway? So yes, at this point in time, the rescue operation is over, and in fact, I would like you to show you the visuals. That is the building, and in fact, which is surrounded with the whole slum. So this is the building which is in fact surrounded by the slum, and you can see this building is located in a very congested area. As we pass on with the narrow lanes out there, you can understand the kind of situation that had appeared yesterday. As we give you the live visuals, you can see the debris out here. These are the debris. These are the debris, and in fact, as we report out here, this is the location, this is the building on the 4th floor. On the 4th floor of this very building, in fact, the flooring work was underway. And in fact, as we pan the camera and show you the visuals, my video journalist Neeraj is showing you the visuals out there. On the 4th floor of this very building, the flooring work was in fact going on. And in fact, Kishan Chand Chaurasia, who is the owner of that very apartment, he has been booked under various sections of BNS. And in fact, police is also verifying how old this building was. I would request Neeraj to show you
the kind of stage, the kind of building this is. You can see the cracks out there. You can see this is the cracks can this very much establishes the fact that how old this building was. In fact, I spoke to Kalyan police few minutes back, and in fact they mentioned that this building is 20 to 25 years old. We have few resident out here. आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ था, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है? एक्चुअली देखने जाएगा तो ये बिल्डिंग कम से कम 45 इयर्स पहले की बिल्डिंग है और इसमें कल 6 जन ऑफ हो गए। तो हम लोग ने रेस्क्यू उसमें से 2 लेडीज़ को हम लोग ने खुद निकाले ले और उसके बाद में बिल्डिंग को ऑलरेडी इधर नोटिस दिया गया था लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। और ऊपर से बहुत बिल्डिंग के आपने अभी कंडीशन देखा रहेगा क्या कंडीशन है बिल्डिंग की। और फोर्थ मारे से लेके नीचे तक पूरा मतलब जो अंदर का जो स्लैब है वो पूरा नीचे आके गिर गया है, पूरा नीचे आके गिर गया है। उसमें 6 जन आए, पूरे 6 जन आए। इसमें मेरा भाई भी है, उसका भाई, मेरा भाई भी है, मेरे मौसी का लड़का है उसमें, निखिल खरत करके उसका नाम है। तो उसको भी इंजरी हो गया, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ। कितने साल से रह रहे थे आपके भाई? वो इधर ही मतलब उसका बचपन इधर ही गया है, हम लोग का बचपन इधर ही गया है। तो अभी देखो अभी क्या करते क्या नहीं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जो है इतनी पुरानी थी, नोटिस भी दिया गया था, तो इसका रीडेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हुआ। रीडेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कलर मार देती थी, मतलब छोटा मोटा काम करती थी। वैसा अंदर से वैसा उन लोग ने कुछ भी काम किया नहीं है। इसके वजह से आज ये खतरा सबको सामना करना पड़ा। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है इसका? वो अभी किसको हम लोग बता नहीं सकते कि अभी जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार अभी इसमें अभी फिलहाल है कौन, इसमें कोई बता नहीं सकता। अभी फिलहाल यही है कि जख्मी लोग को क्या देते अपने गवर्नमेंट क्या बोलती है क्या नहीं। और ऊपर से अभी जिसका नुकसान हो गया है, किसके परिस्थिति नहीं है यह हालत में अभी इधर से बाहर निकलने की, वो हिसाब से अभी क्या होता है क्या देखना पड़ेगा। So as you heard the reaction of one of the kin of the family members, in fact, who got injured in this very case. आपसे बात करेंगे कैसे ये घटना हुई। आप क्या बोलूं कैसे घटना हो गई, बहुत बुरी घटना हो गई। ये सब जन मर गए उधर। बाबा मैं ही थी उधर, वो बहुत चिल्लाई, मैं बहुत सबको बुलाया, अपन सब जन आए, बहुत घटना बुरी हो गई। ऐसा होगा क्योंकि हम लोग भी उधर ही रहते हैं ना, वो कभी गिर जाएगा तो हमारे इधर भी गिर जाएगा, फिर वही तो डरते हम लोग क्या हो गया क्या नहीं। अभी इतना आदमी मर गए फिर। हाँ होए बिल्डिंग को मेरे हस्बैंड है ये तो ये क्या हुआ था? मैं काम पे था। ये थे काम पे थे। ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग? 95 का है। 95 का है। 95 यानी कि 30 साल हो गए। हाँ 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। तो सरकार ने कोई नोटिस वगैरह इनको दिया था कि खाली कर दो घर? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। आपको क्या लगता है किसकी गलती है इस सारे घटनाक्रम में? ऐसा तो कैसे बोल सकते हैं ना किसकी गलती है। वो अपने आप ही गिर गया, वो किसी ने कुछ तो किया ही नहीं। ऐसा होएगा ऐसा सोचा ही नहीं था। अभी 30 साल से हम लोग तो इधर रहवासी है ना, ऐसा मालूम ही नहीं है ये गिरेगा करके। छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब बच्चे ही गए ना। सो हम लोग को डर लग रहा है हम लोग का। इधर हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग जो ऐसी गिर जाएगी तो मेरे घर पे ही आएगा सब। आपका घर कहाँ पे? यहाँ है मेरा घर। हम लोग को डर लग रहा है, ये हम लोग का भाई है ये मेरा। वातावरण जो है अभी पूरा डर का माहौल इधर फैला है। इधर आप देख सकते हो, इधर है पूरा खाली, पूरा सील अप कर दिया है, सब पूरा सील किया पूरा एरिया। कल केडम से आके शासन ने पूरा हम लोग को बता दिया, सूचना दे दिया है कि आप यहाँ से अभी पूरी तरीके से आप अभी खाली जाओ। So as you just heard the reactions of the family members and the local resident out here, I would like you to show you the visuals. Now you see how congested this whole area is, as this has been in fact barricaded right now with a rope in fact. But ultimately you see this is a chawl out here, and between this very chawl there is just 3 feet distance between this very building and that very
small house. And just next to this is the same building which is in fact attached to this building, and that is on this side of this very fourth floor, that is that very apartment which in fact fell down one onto another. You can see the kind of destructions, the debris can be seen. This is one of the flat which is also the part of the destruction in fact which took place yesterday. यही आपके भाई का ये मेरे भाई का घर है। अभी उसका एक मन भी नहीं होगा उसकी शादी के लिए, और वो बच गया। वो इस साइड में था इसलिए वो बच गया, नहीं तो उसके पैर में पूरा उसका पैर सूजन हो गया है। कल एक्सरे वगैरह सब ट्रीटमेंट हो गया, उसको भी थोड़ा हल्का सा। और कौन कौन था आपके घर? नहीं, मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई था। वो भाई था और बाकी सब सेकंड फ्लोर वाले। अगर आप बताएं कि वो कौन से फ्लोर पे काम चल रहा था इधर? चौथा माले के ऊपर काम चल रहा था। हाँ। और जो ओनर तो बाहर था, जो काम करने वाला जो एक बिगारी था, वो भी बिगारी का ऑफ हो गया। वो भी ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गया। ऊपर से सब सामान पूरा नीचे आ गया। सामान पूरा ये सब नीचे आ गए। तो एक के बाद एक सब फ्लोर नीचे आ गए। वो सब फ्लोर नीचे आ गया। आपको मांगता है तो आप शूट करके देखो। इसका रिपेयरिंग वगैरह बिल्डिंग का करवाया गया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। So you just heard the kind of reaction from the family members, and as he explains the way this slab got collapsed on one onto another, which led to the That's death right, Sandeep. of the situation and the condition of this particular building, and you can also understand from the statements of the nearby residents, they're completely living in an atmosphere of fear because they don't know when the building might collapse again. Looking at the structure, it seems like this is an old building, and the owner of this particular building hasn't really taken any steps to ensure that the structures where it is damaged, it is renovated, and also assurances of safety must also come in from this particular building owner, because there are nearby residents as well. Like they said, that they don't know when another portion of the building might collapse, because that is the appalling state of affairs in this particular structure. But many thanks, Sandeep, for getting us this live ground report.